this is wood, this is skull, and metal and everything is there. So I need a reference to how it should look. So I downloaded few. So this uh, this then I came to know, oh, this is more realistic, and I can go with this one because it's more real and it's actual the uh, so accordingly that hello. So accordingly that I choose my textures. These are few textures. So this thing, what I do, you may know or may not know, but we need a tileable texture for texturing. What is tileable means square texture. So for that we go to Photoshop, and to make it square, we take this one, height, because height is the lesser value, so I paste it here over same, so it will make a square texture. And Photoshop, but it's just a demonstration how I start with like this. Yeah, you can continue a few questions at the same time if you want. I'm just adjusting the making a tile level. So Devgopal, Yeah. can you please talk about that UV unwrapping? Harsh Verma, he's asking us that can you explain me about UV and UV unwrapping? Can you please talk about this a little bit? Okay. Yes, please. What? Okay, UV unwrapping. Yeah. Hello. His question is. Uh-huh. His question is. Can you explain me about UV and UV unwrapping? Yes, sure. Hello. So, hello. Hi. Hello, sir. Can you explain me about UV unwrapping? Yes, we are explaining. Yes, we are definitely here to give an idea. So, yes, please let the software start. So I'll demonstrate at the same time while showing you. So this is the 3D space, okay? Yes. So 3D space, and we create any object is 3D in 3D software. It's Maya. Yes, sir. Okay. So this is the model, and
Devgopal, extremely sorry to interrupt you. Whatever you are saying in English, please continue the same in Hindi as well. Someone is asking for Hindi also, yeah, please. Okay, okay. So this is a 3D model. So what is unwrap actually? Why we need unwrapping? Because the texture we will apply as 2D, because this is two-dimensional thing and this is the three-dimensional object we can rotate. So this area, what texture should be? It will come on a 2D page. So that's why we make UV for that reason. So there are so many softwares to do 3D model and 3D. I'm not going to that perspective, but yes, we get the 2D information to paint or to texture. So this is UV. So here I'll quickly make a UV. So now in Maya, 2D is very handy and useful. You don't need to do anything. There is new option called UV toolkit. So here is everything before we do manually. Now all the things are there. So basically the idea is, so we make this. So this information, 3D information, will come to a square frame, square box. So this is our UV page, the information page. So according to this, I'll paint on any texturing software where we do texturing. So we'll export that and we'll take it in any other software. So that's why we need a square texture, because that the information area is square. So you get it, what is UV as? Hello? Sorry to interrupt you, sir. Hello. Can you hear me? Hello. Hello? हाँ सर, मैं यूँ बोल रहा था Yes, मतलब एक तो आपने जो बताया ये ऑटोमेटिक वाली थी ना। हाँ, एक्चुअली मैं आपसे मतलब कॉम्प्लेक्स वाली पूछ रहा था थोड़ी, जो मतलब किसी नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, मैंने बता सकते, क्योंकि उसमें मुझे one second, but this is the idea what is unwrapping. The complexity and everything you can do, आप कर सकते हो, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक वर्कफ्लो मीन्स ये सेमिनर मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर क्लासेस हो तो इन डिटेल सब कुछ मैं बताऊंगा, जैसे मैंने रखा है कि एवरीथिंग मतलब टच करेंगे जो हमारे पास गाइडलाइंस में है, सिलेबस में है। ओके, सो कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी जैसे मैंने दिखाया था। हाँ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, ये 2 घंटे में बहुत लोग हैं। हाँ, सो ये जैसे मैंने ये सारी का जितने बताया कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ये इतने एरिया, तो ये सारे चीज मुझे यूवी करके और कैमरा बहुत क्लोजली है, बहुत सारी चीजें, तो ये कम्प्लेक्स है और ग्राउंड पे बहुत ही क्लोज जा रहा है, तो कम्प्लेक्स है। वो कैसे करना है, जैसे ये रूट ये अंदर जाता है, बेंच जाता है, बहुत इन डेप्थ है। तो यूवी में बहुत सारी चीजें हैं, पर्टिकुलरली ये टॉपिक पे आप जानना होगा तो डेफिनेटली विल टीच दैट। मतलब आप अगर ज्वाइन करो, या आप क्या कर रहे हो अभी? सर मैं एनिमेशन कोर्स किया है वो मैंने अभी, और मतलब मेरा लाइटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं सोच रहा था कि मतलब बेसिक मुझे टेक्सचरिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग, शेडिंग, टेक्सचरिंग इज मच बेटर। हाँ, सो इसीलिए हम लोगों ने डिजाइन किया इंडस्ट्री लेवल की कैसे। हाँ, तो एक्चुअली बेसिकली बहुत लोग मतलब यहाँ लिमिट्स है, तो इसके लिए इधर उतने इन डिटेल्स नहीं करवा सकते हैं, लेकिन श्योर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो so that was texture. You got another idea, this logic कि हम UV क्या है और क्यों करते हैं, right?
मतलब आपको पता भी होगा पहले से, बट Okay, ये मैं okay. जस्ट क्विकली हाँ, डेमोन्स्ट्रेट हाँ. किया कि क्या। हाँ, अच्छा। सो इसीलिए हम स्क्वायर हाँ, ये लेते हैं नॉर्मल ये। वाला तो पता है. हाँ हाँ। सो फॉर हम्म. मोर इम्पोर्टेंट Just